The people who have recently joined, please complete the link which I have given. Maybe you are not able to view it. I'll share it again. Okay. Thanks, Supriya. Thanks, Neelam, for completing. Others, please do complete it. Mr. Dilip, sorry. Then Nitra, Shirsekar, Hajra S, and Royal Seals. Can somebody confirm my screen is visible? Yes, sir. Okay, thanks, Yeah, Dilip. it is visible. Thanks, Dilip. Let's begin the session. So, very good morning to all of you, and hope you had a very good festive season. So, greetings of the festive season to all of you. My name is Amitabh, and I'm a part of PNC Academy, and we do conduct the different sessions on the portals like Supplier First, RFX Manager, our auction, okay, for vendors, as well as we do it for the internal employees as well. So, this particular session, that is creating JMS on Supplier First portal, we conduct this session twice a week, that is Monday and Friday, 11 o'clock. Okay, so every week we do have the sessions, and accordingly, it is being intimated or informed to your buyers as well. Okay. So if any of your colleagues who are unable to join today, they may join in the on the Friday's batch, or maybe coming next Monday batch. Okay, so we have regular batches which are happening for this. As this particular topic, though it is not new for you, but the portal on which you are working is new, and that's what we are here to understand. What exactly is different than what you were using earlier? I believe most of you must have been using EBIZ portal prior to this. How many of you were using EBIZ earlier? Can I just have a hands up? Okay, Neelam, Dilip. Okay, only two of you. Yes, sir. Okay, rest all were not using it. Supriya, Netra, Jayesh, Sachin. I don't know who is at Royal Seals. If you can just put your name, that would be helpful for me to communicate with you. Fine, no worries. So, what are we going to understand here is why the Supplier First portal and how do I work on this particular portal. If I talk about the JMS as a process, JMS as a process, there is no change in it. There is no change in the steps, the process, uh, what I'm supposed to do. Whatever you were doing earlier, thanks, Ian. Whatever you were doing earlier, the same process are followed here as well. Only thing is the container. The earlier it was EBIZ, now it is the supplier first. That's it. That's the only change which is here. Correct. Fine. Recently, those who have joined, I repeat, please complete this form which I'm sharing the link. Maybe the new joinees may not be able to view it. I'm giving it again. Those who have not done it, please do that. Okay. Uh, okay. So
This is the agenda of this session, like understanding the supplier first portal, then understanding how do I create the JMS over here. Okay, how do I upload the invoice and track the JMS as well as my invoice. Towards the end of the session, we will understand how do you communicate your queries and get it resolved. Okay, and how do you track it, because that's one of the important thing, because till now you were writing emails and the emails were being replied, but that is not the case now. Okay, the tickets are being raised, so how do I create a ticket myself? From where am I supposed to do it? How do I get the support? Okay, all these things we'll be doing it towards the end of the session. Okay, so that's how our entire session is being planned. Now coming to the content part, like supplier first. Now, as the word itself says, the supplier first, wherein the supplier is kept at a center point, at the first point, understanding what all things need a person needs to do as a supplier. Okay, the supplier may be related to the materials, may be related to the service, like you people. Okay, or a supplier, before you give the material, before you give the service, there is something called as I have to give my offer. Okay, the auctions are there. Sorry. So lots of things happens over here in between you and the Reliance. And for this, each of this activity or action, there are different portals. So what you have to do is you have to hop in between the portals. So that is not the case now. This one stage or one platform application will help you to navigate in between the different applications, different portals, okay, without moving or jumping in between. It would be seamless. And so it is said like the Supplier First is an end-to-end procurement platform specifically designed for suppliers where they can access, view, modify their orders, create shipments, and take part in invoice related activities. The platform equips every vendor with all tools required for the smooth, interactive, and the seamless procurement experience. And that's the reason why this new architecture, the new design is being formed. So this is not just a new design is being introduced. So behind this, there were feedbacks also, which we received from you guys. Okay, the vendors who were working on it, the people who were working on it. Okay, if you take few examples. Okay, before I go ahead, all of you are comfortable only with English, or you want me to be do the combination of Hindi English together? I'm sorry, I would have asked you earlier. My mistake. Hindi, Sorry. Uh, Hindi compatible. yes, Hindi compatible. Okay. Okay. People are saying English also. Fine. What I'll do is I'll try to speak in English then. Hindi English mix. Would be convenient for all of you. Anyways, I won't go Yes, ahead sir. until Yes, sir. yeah. No issue. चलो ठीक है. Thank you so much all of you. तो ये पोर्टल जब डिजाइन किया, तो इसके पीछे जो होते हैं ना फीडबैक, जो आपसे फीडबैक मिला है या फिर हम लोग जब काम करते थे तो क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, ओके, बेस्ड ऑन दैट अंडरस्टैंडिंग the designs are being created. Okay, सबसे important like one thing is like every 3 months you people used to call our password is locked, we need to reset the password, right? At least once in this entire more than 10 years the EBS is being used. Once you must have done it. Reason could be multiple, है ना? एक आईडी 4 लोग यूज करते थे, किसी ने चेंज पासवर्ड कर दिया, मुझे पता नहीं, तो फिर से मैं चेंज कर दूंगा, वो बंदा दूसरा आ गया, he is unable to log in because password is changed. So this problem or this challenge everybody was facing. Okay, password. So we have handled that. Secondly, recently you can say Microsoft has launched or has come up with Microsoft Edge. There is no support which is given for Internet Explorer, whereas EBIZ was supporting or was compatible with Internet Explorer 9, 10, and 11 version. Now, as the browser itself is not supported by the
Microsoft, people were facing challenges again. Okay, you were getting an error, SAP pop-up error. So again, we used to share some settings to you. You are doing the settings on your system for Google Chrome or for Edge, and then again working. Right. So these are the few of the challenges which most of you were facing, and those we have tried to handle over here. And that's what are the new things what we have here in this. So now we have the easy and enhanced security for login. अभी enhanced का मतलब क्या है और easy क्या है? So जैसे हम EBIZ में लॉगिन करते थे वैसे ही यहाँ पे भी करना है. हमारे पास एक यूजर आईडी होगा जैसे EBIZ में होता था. Similarly यहाँ पे भी होगा. But now we do not have password. Instead of password, we will have OTP. और ये OTP जो है वो आपके ईमेल एड्रेस या फिर आपके मोबाइल नंबर पे आ जाएगा. सो हर यूजर के लिए एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर होगा जिसपे कि उनका ओटीपी आ जाएगा. सो पासवर्ड रीसेट करने का जो हमेशा करना पड़ता था वो अब नहीं होगा. ठीक है, आपके आईडी का पासवर्ड या आपके आईडी का पासवर्ड आपके हाथ में होगा बिकॉज इट इज ओटीपी. द नंबर विच यू हैव गिवन ऑन दैट नंबर और द ईमेल आईडी आपने जो दिया है उसी पे आपको ये ओटीपी रिसीव होगा. Okay, so this is how it is enhanced and nobody is going to access apart from you. um I'll go to third point. Supported by multiple web browsers. जैसे कि पहले मैंने कहा था कि पहले सिर्फ इंटरनेट एक्सप्लोरर ही सपोर्ट करता था. नाउ इट वर्क्स efficiently or you can comfortably work on the edge because the compatibility is there. Microsoft Edge as well as Google Chrome. Okay, you're not restricted to one particular system now. ठीक है, आप मोबाइल से कर सकते हो एक्सेस, आप टैब से कर सकते हो, डेस्कटॉप हो डेस्कटॉप से कर सकते हो. ओनली थिंग व्हाट यू नीड इज द एक्सेस एंड द इंटरनेट कनेक्शन. ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन है, एक्सेस है, ऑन द गो आप आपके जेएमएस बना सकते हो, है ना, ट्रैक कर सकते हो कि क्या स्टेटस है. सो इट इज नॉट restricted to one particular platform. When we talk about the look and feel, the user interface, as compared to the earlier one, it's very easy to understand, read, feel. Okay, so I would say it is more of more readable now. मतलब ऐसे नहीं था पहले पढ़ नहीं सकते थे, but font size, the color, texture, all these things are being improved now. It's very easy to read, very easy to understand what type of function this particular tool will be doing. बटन है तो बटन की तरह ही पता चलेगा, ड्रॉप डाउन है ना. अगर आपको पता होगा कि पहले हमें जाके वो रेक्टेंगुलर क्लिक करना पड़ता था, वो ढूंढना पड़ता था कहां पर है कहां पर है, बट नाउ इट वोंट बी द केस. ड्रॉप डाउन है तो एरो दिखेगा, पता चलेगा अच्छा ड्रॉप डाउन है. एंड दैट्स व्हाट वी ओवर हियर वी कॉल इट हैज एन इंट्यूटिव अपीयरेंस. अब जैसे चाहिए आपको डेटा देख सकते हो, फिल्टर कर सकते हो, जो नहीं चाहिए वो फिल्टर आउट कर दो. और जब भी आप काम करोगे यहाँ पे आपका रिस्पॉन्स टाइम जो है 3 सेकंड से भी कम है. नाउ हाउ डू वी चेक इट? जब मैं डेमो दिखाऊंगा दैट टाइम विल चेक इट आउट. ओके, सो दिस आर द enhanced features or what is new in the supplier first portal. Am I clear on this part? सभी को समझा ये? इसमें कुछ क्वेरी है? Please let me know. I'll try to handle all the queries which people come across during the like which we have received. You can unmute yourself and tell me. Okay, thank you so much. So let us get into the portal and understand the login part first. Okay, so I'll go back to presentation. Okay, so अभी EBIZ जब करते थे तो EBIZ का URL था ebiz.ril.com. तो सप्लायर फर्स्ट का क्या है? सो सप्लायर फर्स्ट का जो है वो है supplierfirst.ril.com. I'm zooming my screen. Just see. I hope it's visible now. So supplierfirst.ril.com. आप गूगल क्रोम पे डालिए या माइक्रोसॉफ्ट एज पे डालिए, एंटर करिए एंड इट विल वर्क.
मान लीजिए अगर दिक्कत आती है तो क्या करिए आप, ब्राउजिंग हिस्ट्री क्लियर कर दीजिए, कैशे मेमोरी क्लियर कर दी एंड देन ट्राई ओपनिंग इन द न्यू ब्राउजर। जैसे आप ये पोर्टल पे जाओगे, आपको पूछा जाएगा आपका सप्लायर आईडी। आपका सप्लायर आईडी वही होगा जैसे आप ईबीज पे यूज करते थे। आई विल जस्ट रिआइटरेट इट अगेन। क्या होता था, आई विल कम बैक, मिनिमाइज कर देता हूं। मान लीजिए कि आपका वेंडर कोड, जैसे अभी यहाँ पे एक एग्जांपल वैसे ही दिया, वेंडर कोड आपका है ABC। अब इस ABC ऑर्गेनाइजेशन में वेंडर एंड पे मान लीजिए 4 से 5 लोग ईबीज पे काम करते हैं। अब उस 4 लोगों के लिए अलग अलग आईडी होगा। तो आईडी कैसे होता है, वेंडर कोड जैसे ABC, उसके आगे 01, 02, 03, 04 एंड सो ऑन। सो हर यूजर का एक अपना आईडी बन जाएगा। ठीक है, वेंडर कोड के बाद जो सफिक्स लगेगा वो है नंबर ऑफ यूजर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल और एक ले लेते हैं, मेरा वेंडर कोड है 1234। सो मेरे पास 3 यूजर हैं। सो वो कैसे बनेंगे यहाँ पे, 123401, 123402, 123403, 123404 एंड सो ऑन। और हर यूजर आईडी का उनका खुद का ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होगा जो वो खुद एक्सेस कर सकते हैं। तो हर बंदा अपने लाइक आईडी से एक्सेस करेगा। सो देयर वोंट बी एनी issues of password here, because the OTP you will receive on your mobile or the email and you log in. Okay, so what we have to do is, let's say the first user is using, enter the supplier ID and click on login. Once you click on login, it will prompt you, where do you want your OTP to be received? So you want it uh, on your email or the mobile number, or you want it on both? जैसे आपकी बोलते हैं ना पसंद है, accordingly you choose it, email, mobile or both, and click on continue. Once you click on continue, the OTP will be sent to you on that particular email ID or the mobile number which you need to enter. Okay, and then continue. So the OTP is the 6-digit number which should be used within the 3 minutes time. Okay, नहीं तो एक्सपायर हो जाता है वो। और आप कंटिन्यू कर दीजिए। जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे आप लॉग इन हो जाओगे। दैट इजी इट इज। सॉरी, क्लियर है ये बात? हाउ डू वी लॉग इन? सर एक क्वेश्चन यहाँ, था। हाँ जी बोलिए। सर एक्चुअली ये जो ये जो वेंडर कोड डालते हैं उसमें जिसका आईडी मैप होता है ईमेल आईडी, तो उस ईमेल आईडी पे ही पासवर्ड जनरेट होता है। बराबर, ऐसा ही है ना? तो और करेक्ट। किसी को ऑथराइजेशन देना होगा तो उसमें उसका ईमेल आईडी वेंडर कोड को मैप किया जाएगा। अगर मान लीजिए जैसे नीलम जी आपका आईडी है, राइट, ऑलरेडी यस आपका ईमेल आईडी उसमें है, ठीक है ना? यस जब तक आप वो ईमेल आईडी बदलोगे नहीं, दूसरे ईमेल आईडी पे जाएगा नहीं। पर नहीं। अगर मान लीजिए किसी और को चाहिए, देन यू कैन क्रिएट वन मोर यूजर। ओके, उनका ईमेल आईडी मैप किया जाएगा फिर। हाँ, तो आप वैसे रिक्वेस्ट भेज दीजिए, ठीक है? यू कैन राइट ईमेल टू अस। मैं लास्ट में बता दूंगा कहाँ से कर सकते हो आप ये, ओके ठीक है? ओके। बिकॉज दिस इज द चैलेंज विच मोस्ट ऑफ द पीपल। और एक चीज होती है कि अब तक ईमेल आईडी पे या मोबाइल नंबर पे कभी ध्यान नहीं दिया था, कोई जरूरत ही नहीं थी, है ना? तो कैसे था कि आपका ईमेल आईडी जो होता था मे बी आपके एचओडीज का था या मे बी आपके प्रेसिडेंट वीपी जिनका, उनका ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर होता था। राइट। अब उनके ईमेल आईडी पे मोबाइल नंबर पे बार बार अगर ओटीपी जाएंगे, इट वोंट बी इजी फॉर यू एज वेल एज एंड कन्वीनियंट फॉर देम ऑल्सो, कि बार बार वो आप उनसे पूछे आप ले ले, है ना? सो आप अपडेट कर सकते हो, ठीक है? I'll explain you when we get into the portal। और ये कैसे आप करोगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन, मैं जब जो कह रहा हूँ ना टिकट्स वगैरह, वहां पे मैं आपको समझा दूंगा। ओके। ओके,
ये था लॉगिन के रिलेटेड। एक और चीज बाय मिस्टेकनली होती है लोगों से, कि ईबी से हम सप्लायर फर्स्ट में आते हैं, तो एक माइंडसेट हो जाता है कि बाबा ये नया पोर्टल है तो मुझे नया लॉगिन बनाना पड़ेगा, नया साइन अप करना पड़ेगा। सो व्हाट पीपल डू इज, इंस्टेड ऑफ लॉग इन और साइन इन, दे क्लिक ऑन साइन अप। आई शो यू, है ना, इस साइन अप पे क्लिक करते हैं। आपको साइन अप नहीं करना है, आप ऑलरेडी वेंडर हो। ये साइन अप किसके लिए है? जो नया वेंडर बनना चाहता है, ये उसके लिए है। Okay, so please do not click on sign up. If you are already a vendor, you need to enter the vendor ID, or that is a supplier ID, and enter the OTP and login. That's it. That's simple. ठीक है? तो ये एक और चीज होती है, मैं साइन अप कर रहा हूं तो नहीं जा रहा है, या लॉगिन नहीं हो रहा है मेरा, या कुछ लोग जो है वो ईमेल आईडी एंटर करते हैं, इंस्टेड ऑफ सप्लायर आईडी दे एंटर द ईमेल आईडी। Please do not enter the email ID. Your vendor ID, sorry, your user IDs are there. अगर आपको पता नहीं है, you can approach us, we'll help you out with your user IDs. Okay? और जैसे आपकी ईबीएस पे थे ना, वैसे ही यहाँ पे ईबी यूजर आईडीज बने हैं, तो वैसे दिक्कत आने वाली है नहीं आपको। So this is all about the login into the supplier first portal. I hope I was able to convey it to you all. Before I get into the new things, okay? अगर कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। So no questions. अच्छा, हम एक काम करते हैं, हम थ्योरी करने से अच्छा डायरेक्टली हम प्रैक्टिकली ही सब सारी चीजें देखते हैं, ठीक है? सो आई विल टेक यू टू द पोर्टल नाउ। जस्ट मुझे बता दीजिए कि मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा है क्या? आई एम शिफ्टिंग माय स्क्रीन। कैन यू सी द ब्राउजर, ऑल ऑफ यू? यस सर। Yeah. अब यहाँ पे एक थोड़ा छोटा सा चेंज है जो आपको मैं पहले बता दूं। आप लोगों को मैंने यूआरएल कहा था supplierfirst.ril.com पे आपको जाके लॉग इन करना है। ओके, इन माय केस राइट नाउ आई एम नॉट यूजिंग दैट रीजन, आई एम यूजिंग द क्वालिटी सर्वर, जो कि जो चेकिंग के लिए, टेस्टिंग्स के लिए यूज होता है, वो है। आई कैन नॉट यूज द लाइव वन बिकॉज वहां पे तो सारे एक्चुअल रियल टाइम डेटा होता है। सो व्हाट वी विल बी डूइंग इज अ डेमो, है ना? सो आई एम यूजिंग अ डमी सर्वर, जिसपे कि वील हैव अ रियल टाइम लाइक फील ओवर हियर, ऑल द थिंग्स, क्योंकि इस पे थोड़ा आर&डी वगैरह होते रहता है, तो कभी कभार कोई एक आध फंक्शनैलिटी दिखनी नहीं है, बट आई विल एक्सप्लेन यू एंटायर थिंग, डू नॉट वरी अबाउट इट। सो आई log in into it now with my ID. Okay, and then I'll click on login. ठीक है? अगर फिर मान लीजिए आज आपको पता है, पर कल परसों अभी पता चला कि अरे कुछ तो मतलब समझ में नहीं आ रहा, या किसी और को समझाना है, लेट्स से, so you have here how to log in, and you can say manual is available here. आप यहाँ पे क्लिक करिए, आपको वो दिख जाएगा। ओके, हाउ टू लॉग इन एंड ट्रबल शूटिंग, जो भी मैंने अभी आपको समझाया, ऑल द थिंग्स यू कैन फाइंड इट ओवर हियर, सो यू डू नॉट हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी। यही चीज, यही दिखाया था मैंने आपको अभी। ओके, सो अगर मान लीजिए इन फ्यूचर भी अगर है ऐसा कुछ दिक्कत आती है, यू नो नाउ फ्रॉम वेयर टू गो एंड टेक द सपोर्ट, क्लिक हियर। तो लॉगिन के रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है, कैसे करना है, यू कैन गेट इट। फाइन, सो लॉगिन, OTP I want it on my email ID. Okay, continue, and is the OTP what I received, and I'll continue.
Profile update, I'll do it later. Remind me later. Okay. So once you log in into the portal, this is the home page you can see, which you can, which you see on your screen right now. Okay, wherein you can see order, shipment, measurement sheet, payments. ये टैब जो है कुछ लोगों के लिए मतलब जैसे दिख रहा है वैसे नहीं हो सकता. Based on your work, based on your requirement, tabs ये दिखेंगे. ठीक है. But orders everybody can see, measurement everybody can, sorry, payments everybody can see. Depending upon the requirement, whether आप material के related काम करते हो या service, तो measurement sheet या shipment होगा. ये दोनों भी हो सकते हैं. Right. पहले हम लोग ये पोर्टल या ये होम स्क्रीन पहले समझ लेते हैं, देन विल गो अहेड विद द क्रिएशन ऑफ द जेएमएस. Now, when you come to here, come to this particular screen, it shows us who has logged in. Okay, so the login person is Amitabh More, and from which organization he is. Okay, so these are some dummy data actually. I can see all those. Now, if I want to see who are the users in my organization, I can go to my profile. And here you'll be able to see your address in the sense I'm talking about your vendor address, bank details, user details. Okay, all these things you can view over here. See, these are the users. Okay, all the users. Correct. If I want to see the bank details, so there are the links here, bank account details, click, it will take you to the bank account details. If I want to see my vendor details or the company details, click on the company details, you'll be taken to that. If at all you want to edit, for example, your address is changed or you want to update the bank details, you can go to edit profile. Okay. Now what you want to change accordingly, company या फिर account details. So मान लीजिए बैंक डिटेल्स मुझे अपडेट करने हैं. Click on account details. You're here. Add bank. Okay. So first of all, you add the bank, let the bank get added, और फिर आप previous वाला delete करिए. Previous वाला पहले ही मत delete करने के लिए बोलिए. Okay. So let the new bank get added, confirm it, and then remove the older one. Old one remove करने के लिए आपको आपके buyer को बताना पड़ेगा. Then you click on add bank. So enter the bank details, and along with it you require some documents also to be given. Okay, like bank letter, bank verification letter, cross cancel check. So documents में जाइए, and those all documents whatever are required यहाँ से आप upload कर सकते हो. Am I clear on this, everybody? Yes. Okay. So silence, shall I take it as yes? Okay, thank you. Thank Yeah, you so yeah. much. Fine. So this is how you can update the details of yours. But let's say at present, you want to add a new user or the existing user's email ID or the mobile number you want to change it. Please write it to us. Okay. It will allow you to update over here, but it will not get updated as of now. जैसे कि मान लीजिए मैं ऊपर यहाँ पे आता हूँ. Go back. So let's say here. Edit profile. So sorry. Yeah. If I want to add a contact, I can, it will allow me, but at present is not getting updated. So till the time we give the information, तब तक आप हमें भेजिए, हम update करा के आपको भेज देंगे. ठीक है, यहाँ से भी आप update कर सकते हो, but as of now it is not getting updated. Okay, so once the everybody is on this platform,
this entire thing will get full-fledgedly uh, in action. ओके, सो आप एडिट पे क्लिक करके यहाँ से ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हो, ठीक है। नाम बदले का लाइक एट टाइम्स ये जो नाम है, ही द पर्सन वाज वर्किंग विथ यू, ही इज इनटू सम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन और मूव टू सम डिफरेंट डिपार्टमेंट, ऐसे कुछ भी हो सकता है, तो आप नाम भी चेंज करा सकते हो। ओके, any questions you have? There's something written, let me check. Sachin, right now we have not yet reached to that part. Okay. You can write it to us related to this query because I won't be able to handle one-to-one queries over here. Okay. And as of now, we have not yet reached to this part also. Concern person. I said towards the end, I'll explain all this, whom you're supposed to write and all. Okay. Okay. At present, we are in the beginning phase, not even seen how to create the JMS. Okay. And what the question, what you're asking is the last part of it. Okay, just wait for some time. Thank you so much. Fine. So this is how you can edit and update the details of the contact details, other I'll say. Right. Let me come back to the home screen. You're back here. So you have your notifications, help. Help, I'll explain you towards the end. What is help? Okay. Apart from that, towards the left-hand side corner, you can see procurement, sourcing, reports, and all these tabs. So when you click on procurement, okay, by default you're into the order management. जो अभी screen दिख रहा है ना आपको, by default you're into order management. Correct? Then you have the inspection release. Inspection release, we may not require it. It is more for the material vendors, जहाँ पे कि inspections होता है materials and all that. So वो entries यहाँ से होती है. So we may not be able to see also, या फिर जरूरत नहीं हमारे लिए. Coming back to the sourcing. Sourcing, you can see your RFX, R auction. These are the portal from where you can give your offers. You can attend the bid. है ना? So यहाँ से आप क्लिक करिए, आप डायरेक्टली वहां चले जाओगे. मान लीजिए बायर ने आपको कोई ऑफर भेजा है देने के लिए, सो यहाँ से आप लॉग इन कर दीजिए सप्लायर फर्स्ट पे, RFX पे, सोर्सिंग में जाके RFX पे क्लिक करिए, आपको वो RFQ दिख जाएगा और आप आपके ऑफर दे दीजिए. ठीक है. So directly from this portal you will be landing into the RFX manager portal. तो अलग से आपको जाके ID पासवर्ड देने की जरूरत नहीं है. Then coming to the reports, you can see the reports here as per the JMS or as per, you can say, the POs या कब आपने create किया था date wise. Okay, so all these combinations you can see and download it into Excel format. Okay, and you have the supply chain management. Okay, SCM portal जहाँ पे हमें compliance entry करनी होती है. सो कंप्लायंस एंट्री जो है अभी भी SCM पोर्टल पर ही होगी. ठीक है, जैसे पहले होता था, उसमें कोई चेंजेस नहीं है. सो दिस इज ऑल अबाउट द पोर्टल ऑन विच यू आर गोइंग टू वर्क. आई जस्ट मेड यू पीपल फैमिलियर विद द पार्ट्स ऑफ इट. नाउ कमिंग टू द टैब्स हियर. सो यहाँ पे आप देखोगे ऑर्डर्स है, शिपमेंट है, मेजरमेंट शीट है और पेमेंट्स. ये सारे टैब्स हैं. ऑर्डर्स में आप नए ऑर्डर्स, वी कैन सी द न्यू ऑर्डर्स, orders which are in process, then annual rate contracts. Okay, these are the three which are helpful for us. CCR is not for us. Okay, this is for the international one. So this we are not going to touch up here right now. So new orders में आपके जो नए orders आए होंगे, जो आपने acknowledge नहीं करे हैं, all those orders you can see in new orders. ऑर्डर्स इन प्रोसेस में आपको वो ऑर्डर्स दिखेंगे जो कि पुराने हैं, जिससे आपके साथ, जिसके साथ आप पहले भी काम कर चुके हैं, जो EBIZ में भी आप यूज करते थे, वो सारे ऑर्डर्स प्लस जो अभी रिसेंटली आपने एक्नॉलेज भी किए हैं,
वो. So we can say that all the orders which are acknowledged you can see in the orders in process. और उसके सामने जो ब्रैकेट दिख रहा है ना, उसमें वो नंबर दिखाई देगा कितने हैं ये. ठीक है. कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट इज एनुअल रेट कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हम ARC भी कहते हैं. May not be applicable for all of you, but there are people, there are vendors whom, where the ARCs are there. So this is just an annual rate contract जो आपको यहाँ पे दिखाई देगा. Annual rate contract is just a read only document. इससे आप कुछ नहीं कर सकते, ये सिर्फ रेफर किया जाएगा. बोलो सॉरी, चलছে তো দেখে যাবো may I request everybody to put yourself on a mute? Thanks so much. तो यहाँ पे एक चीज होती है कि आप कहते हैं कि मैं जेएमएस बनाना चाह रहा हूं, बट यहां से जेएमएस बन नहीं रहा है. ठीक है, पता चलता है कि आप एआरसी में जाके कर रहे हो. एआरसी में कहीं पर भी आपको ऑप्शन नहीं है कि वो आप बना सको. यहाँ पे सिर्फ एक आई आइकन दिया है. wherever you see this I icon, meaning it is read, I'm sorry, excuse me, read only. आप क्लिक करिए, you can read that, आप डाउनलोड कर लीजिए. Okay, so from ARC you cannot create JMS. ठीक है, be very careful about it. সাউথ এর জন্য এটার জন্য পেন্ডিং আছে Please mute yourself, Ayan. এইটা এইটা হচ্ছে তোমার এই ডব্লিউআইআরপি আছে এর জায়গায় বিতে আছে Mr. Ayan Roy, সরি স্যার please mute yourself. Thank you so much. So, sorry. So from ARC, the JMS is not created, right? Now, coming to the shipment, we are not going to do it. I'll come to new orders and all later on details part. I'm just taking you through the portal. Measurement sheet. This particular tab is used for tracking of your JMS. Okay, when you create the JMS, where the JMS is, with whom it is pending, okay, whether it is approved. Plus, you can upload the invoice from here once the approval happens. That is through ready for submission. Okay, so these are the two parts which we are going to do, sub tabs which we are going to understand here. Manpower contract claims is different. We are not going to touch upon it right now. That is a different session will be done whenever we are starting with it. But right now we are not touching upon the manpower contract claims. And then we'll do the payments. Okay, so what is the status of my payment? Is it written back? Whether it's approved, whether the payment is done? I want to see the advice, or are there any retentions which are done? So all those things we'll see here in the payments tab. Okay. Now starting with the first one, that is our orders. Let's say I have got a new order, okay, and that order needs to be acknowledged. So always I have to see in the new orders. Okay. One more thing here. If you receive a mail like the order is being released for you, okay, so immediately you go and check in here. At times it's not visible, so give some time because the server has a cycle to run. So maybe after that it is visible. Okay, so give some time, and still if it is not visible, just inform your buyer first. Okay, the PO is not visible to you. The reason, just check whether ask your buyer to check for whether it is a digitally signed, okay, and it is pushed in the SAP. If buyer says yes, then you can write it to us also. We'll take it ahead to the technical support team. Why the PO is not visible? Okay. Sorry. So new POs are here. So when I get a PO, let's say for this one 28006272,
2022 is the new PO what I have, and this PO needs to be acknowledged. Okay, so click on this I icon. Okay, and in here you can click on accept. Clicking accept means you have acknowledged the PO. Okay. So from here you can download the attachments also, whatever attachments are there, the PO attachments are there. From here you can download it. Okay, and you can go through the PO also. So once it is being done, let's say you have started the work, you have completed the work, and now you have to create a JMS. So for creating the JMS, you can use either the new orders or orders in process. Okay, so if you go to the extreme right side, you can see the three dots here. Using these three dots, आप JMS बना सकते हो. Okay, how? Click on this create measurement sheet और आप आपका JMS बना लो. ठीक है. So this is how you can start creating the JMS. कैसे? लास्ट में तीन नोट्स हैं, उस पे जाके आप क्रिएट मेजरमेंट शीट पे क्लिक करिए. ठीक है, ये तो हो गया न्यू ऑर्डर से कैसे करना है. मान लीजिए मेरा वो पुराना ऑर्डर है, ऑलरेडी जेएमएस बन चुके हैं, अभी दूसरे वाले बनाने हैं. ठीक है ना. तो I'll go to the orders in process which already I have acknowledged and I'm using it. अब यहाँ पे ऑलमोस्ट 33 POs है. अब उसमें से मेरा वाला PO मुझे चाहिए. तो either you can scroll one by one down या आप यहाँ पे सर्च में डाल सकते हैं. So let's say my PO number is 28006 4. Can you see the changes happening? The response time less than 3 seconds statement was there. So that fast the search would be happening, the process would be happening. Okay, so this is the one which I want, that is 4592. Fine. So this is the order. You can click on this I icon and check what is the order. Okay, and for this, let's say I want to create the JMS. So what I'll do is मैं यहाँ तीन dots पे click करूँगा and click on this create measurement sheet. Okay, आगे जाने से पहले मान लीजिए अगर आपको ये तीन dots नहीं दिख रहे हैं न्यू ऑर्डर्स में भी या फिर ऑर्डर्स इन प्रोसेस में भी, take a screenshot and please share it with us from back or technical team will get it rectified. ठीक है, बट ये तीन डॉट्स आपको एनुअल रेट कॉन्ट्रैक्ट्स में नहीं दिखेंगे. ऑर्डर्स में, न्यू ऑर्डर्स में या फिर ऑर्डर्स इन प्रोसेस में ही दिखेंगे. इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर. Please excuse me. Yeah. Let's go ahead. Now let us see how do we create a JMS. Steps सारी सेम है, कोई फर्क नहीं है स्टेप्स में JMS बनाने के लिए. ओके, सिर्फ कहां पे जाके क्या क्लिक करना है वही आपको समझना है. सो ये मेरा PO है, इसका मुझे JMS करना है. ठीक है, और ये PO का डेट क्या है? 22/2/2023 2023 का है. दैट मींस माय वर्क शुड बी आफ्टर दिस एंड मे बी द PO का जो एंड डेट है उसके दोनों के बीच में ये मेरा काम होना चाहिए. करेक्ट. सो व्हाट वी डू इज गो टू दिस थ्री डॉट्स एंड क्लिक ऑन क्रिएट मेजरमेंट शीट. जैसे आप स्क्रीन पे आओगे ऐसे ही पूरा ब्लैंक दिख जाएगा. ऑर्डर PO नंबर दिखेगा, PO का स्टार्ट एंड डेट दिख जाएगा, पर आइटम डिस्क्रिप्शन आप देखोगे कुछ भी नहीं है. ओके, एंड पीपल पैनिक ओवर हियर, लाइन आइटम्स ही नहीं है मेरे पास.
नहीं दिखेंगे जब तक आप डिपार्टमेंट सिलेक्ट नहीं करोगे। जैसे रिक्विजिशनर हुआ करता था ईबीज में, सिमिलरली ओवर हियर सिलेक्ट द डिपार्टमेंट फ्रॉम दिस ड्रॉप डाउन and see the difference. The line items will be visible. Okay. So first thing what you have to do is department आपको select करना है और उसके बाद फिर आप काम शुरू कर सकते हैं। अगर मान लीजिए डिपार्टमेंट ब्लैंक आ रहा है, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट एंड राइट इट टू अस। दिस क्वाइट पॉसिबल कि कुछ टेक्निकल ग्लिच है, उसकी वजह से आपको नहीं दिख रहे हैं डेट, कुछ अप्रूवल्स बाकी होंगे, व्हाटएवर इट कुड बी। सो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आप भेज दीजिए, विल गेट इट रेक्टिफाइड फॉर यू ऑल। फाइन। अभी आइटम डिस्क्रिप्शन दिख रहा है मुझे, बहुत सारे हो सकते हैं, तो यहां पे मैं आइटम डिस्क्रिप्शन से भी या आइटम नंबर से भी सर्च कर सकता हूं। ठीक है। सो फिलहाल हम ये जो फर्स्ट है जेएमएस रेटिंग टेस्टिंग 1 विल गो फॉर दिस। एक्सपैंड कर लिया। एंड यू कैन सी ऑल द डिटेल्स, है ना, सारे सर्विस डिस्क्रिप्शंस दिख रहे हैं। अब जिस सर्विस के लिए आप जेएमएस बना रहे हो, यू कैन सिलेक्ट दैट, ओके, एंड क्लिक ऑन द कैलकुलेटर बटन। यही स्टेप हम ईबीज में भी करते थे, वहां पे भी कैलकुलेटर बटन था। ठीक है। अब मुझे नया लाइन आइटम ऐड करना है जो आपने सर्विस किया उसका, सो वी विल से ऐड। सो वी हैव गॉट डिटेल्स फॉर दिस पर्टिकुलर hermetically सील्ड मोटर, उसके लिए मुझे सर्विस किया था मैंने, तो डिटेल्स डालने हैं। सो फर्स्ट थिंग इज वेयर डिड यू डू द वर्क। अब ये 2023 का है, सो आई टेक द डेट अकॉर्डिंग टू दैट। ठीक है ना। सो 2023 का है एंड आई टेक द मंथ ऑफ नवंबर। 1 नवंबर से लेकर मान लीजिए 9 तारीख तक ये हुआ। ठीक है। सो द वर्क इज being done in this particular time। यहाँ पे जो भी asterisk mark है, wherever you find the red asterisk mark, all those field needs to be filled entered completely, or it's a mandate rather will say। बाकी fields आप भर सकते हो या skip कर सकते हो। बट कुछ जगह पे मान लीजिए आपने रेंट पे जैसे भी दिया था, व्हाटएवर इट कुड बी, सो इन दैट केस वो इक्विपमेंट नंबर, लोकेशन वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वहां पे आप इंफॉर्मेशन ये भर दीजिएगा। ठीक। अब इसके बाद क्या करना है, आई नीड टू गिव द यूनिट ऑफ मेजरमेंट विच वी कॉल्ड द शेप। सो आप ज्योमेट्री पे क्लिक करेंगे एंड इन शेप यू सिलेक्ट द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब ये कहां से पता चलेगा, ये सारी चीजें आपके पीओ में मेंशन्ड है, प्लीज गो थ्रू इट बिफोर यू डू दिस। सो राइट नाउ आई विल टेक ईच, आई एम जस्ट रैंडमली टेकिंग सम। Okay. For each, how much quantity? It was 2. Accordingly, ये formula भी आ जाएगा and I'll say calculate it. Okay, done and say save. So according to this, the number of base quantity, number of times and total quantity add हो गया and say done. And you'll see the JMS is being created. Now, this is an error which we are getting in the this server. Okay? जब आप done कर दोगे, so you will find I'm just clicking cancel right now because there's some work is happening on it. Okay, that entry you can see over here. Okay, so once this entry is being done, I'll just try doing it one more time for something else. Just let me check it again. My mistake, sorry. I'm supposed to take it 2023. I've taken 2024. My bad, sorry. Okay, geometry is selected.
I'll select it as each we said. There was a mistake from my side. The date I selected was 2024. Calculate it, save it. Okay, now dates are proper. 1st of November till 9th November because our PO date is February to December. And say done. Yeah, it's working. So I got it. Similarly, whatever is applicable, you can do all of those. एक बार वो हो जाए, then you can go to the next step. So इसको मैं minimize कर देता हूँ. What is the next step? All the supporting documents you need to attach. अभी documents क्या है? Your buyer would have told you या फिर local HR ने जो कहा होगा site पे, all those documents needs to be attached over here. So file size यहाँ पे 25 MB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कितनी फाइल्स आप अपलोड कर सकते हो. वो all those relevant files required as supporting for this particular work, you can attach it. Only thing is each file should not exceed 25 MB. और फाइल आपका एक्सेल हो सकता है, वर्ड हो सकता है, इमेज हो सकते हैं, जेपीजी, जेएफ या पीडीएफ हो सकता है या जिप फाइल हो सकती है. You can attach it. So I'll attach it now. Some I'll take the sample attachment and say open. So file gets attached over here, and there is one more part, that is select the type. Once the file comes here, it says select the type. Select the type and then who is going to approve it. Select the approver's name. If your approver name is not here in the list, you can write it, or you can first inform to your buyer also or local HR. Okay. So select the name of the person whom it has to be sent for the approving. Okay. Description or the remarks you can write demo JMS, and then you can review it and then submit it, or you can save it. Save और ड्राफ्ट में जाके सेव होगा, बट रिव्यू में वो चेक करेगा कि ये CJMS मतलब इसका डुप्लीकेशन तो नहीं हो रहा है. इट विल चेक फॉर द डुप्लीकेशन. अगर है इट विल प्रॉम्प्ट यू इट इज डुप्लीकेट, और उसमें यस पे अगर आप क्लिक करते हो, यू विल गेट द डिटेल्स अबाउट दैट डुप्लीकेशन, ऑन व्हाट बेसिस इट हैज बीन सेड डुप्लीकेट. अगर मान लीजिए कि आपका जेएमएस डुप्लीकेट नहीं है, ठीक है, सो एक चीज कर सकते हैं, ट्राई टू चेंज सम values in here, maybe the day or something, but in coordination or in informed to your buyer also. ठीक है, अगर नहीं कर सकते, you can write it to us. टेक्निकल टीम को हम भेज कर वो रेक्टिफाई कर सकते हैं. दिस इज वन ऑफ द क्वेरी विच वी गेट इन कि we are getting the error like a duplicate JMS wherein it is not. Okay, so this is what you're supposed to do it. यहाँ पे एक और चीज है जो कि आपको नहीं करनी है, that is final joint measurement sheet. Please do not click on this. If you click on this, it means कि ये JMS आपका इस PO का लास्ट JMS है, इसके बाद आप नहीं बनाओगे. क्या हो जाता है, ये बन जाएगा, अगली बार जब आप JMS बनाने जाते हो, it will not allow you to create. Okay, so be very careful whenever you are submitting the JMS. Please do not click here. पहले वो SES करके एक error आता था, similar to that it is. Okay, so please do not click on this. As far as you are aware that this is my last, okay, you're confirmed, then you can go ahead and click it. But preferred, do not. Okay, so once you submit it, JMS is created and it is submitted to the next level of approver, that is A1 approver. Okay, and this is how we create the JMS. Now, before we go ahead, can I ask you all how many approvals are required before it is ready for invoicing?
You can unmute yourself or you can put it in the chat window. Hope all of you are there. Yes, sir. No response. Yes. Yeah, yeah. Thank you so much, Neelam. Okay, Netra is writing something. Great, great. Very precise answer. Thank you so much, Netra. Okay, Dilip is also writing something. So basically, there are three levels of approvals when you submit the JMS. That is A1, A2, and the QSD. And once it is approved by QSD, that means I'm ready for invoicing. Correct? So how do I track this? Let us see that. Now, before I go for the tracking part, any questions on creating what you're supposed to Sir, put in shape and all that you need to check it from your PO? Yeah, Neelam, सर you were saying something. सर मेरा क्वेश्चन था बोलिए. एक्चुअली वेंडर जो जो जीएमएस क्रिएट करते हैं तो Hmm. उसका ट्रैकिंग कैसे रखते हैं Okay, that is my मतलब next topic which I'm going. ओके ओके नोट ठीक Thank you so much for initiating it. Thank you. और कोई क्वेरी है बनाने के लिए? तो ट्रैकिंग का भी इसलिए तो मैंने क्वेश्चन पूछा आपको कि ट्रैक कौन कौन अप्रूव करता है, तो पता कैसे चलेगा किसने अप्रूव किया किसने बाकी है. यस So सर A1, A2, and QSD, these are the three levels of approvals which are done before it goes for the invoicing. And to track the JMS, we have to jump in or get into the next tab. That is, I'm going back to the home screen. Just give me a moment. One minute, guys, I'm relogging. मैं फिर से एक बार लॉगिन करता हूँ. So now we have to see how do I track my JMS. मेरा JMS कहाँ तक पहुंचा, किसने अप्रूव किया, किसके पास पेंडिंग है अप्रूवल के लिए, अब वो चेक करना है. So for that we'll go to measurement sheet. ठीक है. तो मेजरमेंट शीट में यहाँ पे दो टैब्स हैं, एक है मेजरमेंट शीट टैब और दूसरा है रेडी फॉर इनवॉइसिंग. सो विल गो टू मेजरमेंट शीट. सो मेजरमेंट शीट इन प्रोसेस. अब यहाँ पे देखोगे आप 15,616 मेरी जेएमएस हैं जो कि इन प्रोसेस है ना. अब ये 15,000 में से मुझे किसी एक को देखना है. सो वन वे इज सर्च करो आप, ठीक है, या मुझे चेक करना है कि ये दिस पर्टिकुलर कंपनी से जो पीओ मिले हैं मुझे. द कंपनी कैन बी रिलायंस इंडस्ट्रीज, द कंपनी कैन बी जियो बीपी, आलो, व्हाटएवर इट कुड बी. अब सिर्फ मुझे उस कंपनी के देखने हैं या फिर मुझे देखने हैं कि कितने जेएमएस मेरे A1 के साथ पास पेंडिंग है, A2 के पास पेंडिंग है, QSD के लिए पेंडिंग है, या कितने जेएमएस ड्राफ्ट सेट में. कभी कभी क्या हो जाता है कि आपका जेएमएस जो है आपने बनाया था और ड्राफ्ट में है एंड लेट्स से वी हैव फॉरगॉटन इट ऑल टुगेदर. नया जेएमएस जब बनाने जाते हैं इट विल गिव यू एन एरर, क्वांटिटी एरर, इट्स नॉट अवेलेबल बिकॉज ऑलरेडी वो कंज्यूम हुआ है आपके ड्राफ्ट में. सो एक तो वो ड्राफ्ट वाला डिलीट करना है
या फिर वो ड्राफ्ट जो ऑलरेडी है उसको ओपन करके आप एडिट करो। ड्राफ्ट में कौन सा है जेएमएस मेरा वो देखना है। ऑल दिस थिंग्स यू कैन फिल्टर इट फ्रॉम हियर। सो गो टू फिल्टर, you can see as per the company, okay, or you want to check it how many are in saved as draft, वो चेक कर लीजिए। या फिर सबमिशन डेट्स, कब ये बना था, तो accordingly you can apply it and you can see all those are in draft। I can see there are 37 now, पहले हमें 15,000 दिख रहा था। So there are 37 JMS which are in the draft state। अब ये जो ड्राफ्ट स्टेट वाले जेएमएस है मुझको उन्हें एडिट करना है या डिलीट करना है, लेट्स से। सो व्हाट यू कैन डू इज टुवर्ड्स द राइट साइड, जहां पे हम लोग पहले 3 डॉट्स देखते थे, यहाँ पे देखिए अभी पेन दिख रहा है। सो क्लिक करिए इस पे, आपको उसी स्क्रीन पे ले जाएगा जहां पे आप जेएमएस बना रहे थे। ठीक है, आपको चाहिए इसको कंटिन्यू करिए भरिए, या नहीं चाहिए यहां से आप डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, और फिर से वो क्वांटिटी आपके पीओ में चली जाएगी। पर मान लीजिए अगर आप डिलीट नहीं कर पाते हो, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप भेज दीजिए, विल गेट इट रेक्टिफाइड फ्रॉम द टीम। ओके, बहुत कम होता है ऐसे, बट अगर मान लीजिए हो जाता है देन यू कैन डू दिस। ओके, दैट इज रेमेडी। फाइन, लेट गो बैक, लीव इट, वी आर बैक हियर। जैसे हमने अभी पेंडिंग ड्राफ्ट स्टेट का देखा था, वैसे ही आप चेक कर सकते हो पेंडिंग विद A1। अब देखिए ये पहला वाला जो जेएमएस है या फिर पीओ नंबर which says pending with A1. Now, as it is pending with A1, can I edit it? It won't allow me. So मैं सिर्फ उसे देख सकता हूँ. I can view it. Okay. So when it comes to pen icon, that means you can edit. When you see the eye icon, that means it is read only. ये दो कॉन्सेप्ट्स ध्यान में रखिए। पेन आइकन आता है तो आप एडिट कर सकते हो, आई आइकन आता है तो आप सिर्फ पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो। सो दिस इज द पेंडिंग विद A1। So basically, measurement sheet in process is used for tracking the JMS. Hope I've answered to your question, Neelam. यहाँ पे नेत्रा ने दिया है कि A1, A2 और Sorry. सॉरी, नेत्रा ने जो कमेंट्स दिए हैं A1, A2 और QSD, तो A1 रहेगा तो A1 के पास रहेगा, A2 रहेगा, तो ऐसे ऐसे सब दिखाई देंगे या हाँ, कैसे? अब जिसके पास यहाँ पे A1 ने अगर अप्रूव किया तो A2 के पास चला जाएगा। तो पेंडिंग विद ओके A2 अगर है, दैट मीन्स A1 ने अप्रूव कर दिया। ओके ओके। जब तक A1 तो नहीं करेगा तब तक A2 के पास जाएगा नहीं, A2 नहीं करेंगे तब तक QSD के पास जाएगा नहीं। दिस हाउ द फ्लो इज। अगर ओके मान लिया सर, QSD के पास दिख रहा है मतलब A1 A2 का अप्रूवल हो गया है। और एक क्वेश्चन था सर कि हाँ बोलिए। ये जो जीएमएस क्रिएट होते हैं, तो उसमें अमाउंट जब भी हम लोग क्रिएट करने जाते हैं तब भी समझ में आता है या कैसे? वो एक बार मतलब अभी समझो 10,000 रुपीज है तो उसका जीएमएस हुआ है 7-8 समथिंग, तो उनको और करना है और क्वांटिटी कम पड़ रही है उनको, तो उसी टाइम पे उनको रेक्टिफाई होता है या कैसे? देखिए यहाँ पे आप पहले ऑर्डर देखिए, ऑर्डर अमाउंट दिख रहा है आपको, यस सर। है ना, बट उसके यस नीचे सर। नहीं दिख रहा यस सर। है ना, यही क्वेश्चन है ना आपका। यस सर। यस सर। हाँ, तो आपको ऑर्डर अमाउंट दिख जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आप वहां से भी पता कर सकते हो। दूसरी चीज, जहां पे अमाउंट नहीं दिखता है ना, दिस आर दी पीओज, या फिर एफओ में कहूंगा उसे, फ्रंट ऑर्डर ओके ओके एफओ, जो कि एआरसी के अगेंस्ट बने हैं ना, उसमें सिर्फ अमाउंट यहाँ पे नहीं दिखता है, रेस्ट ऑल यू कैन सी द वैल्यूज। ठीक है, यस सर। जब आप जेएमएस सॉरी जेएमएस क्रिएट करने जाते हो, I don't know whether it will be able to show you. One second, let me check. ये दिख रहा है आपको क्लेम क्वांटिटी,
यस सर, यहाँ से भी पता चल जाए। गॉट इट? यस सर, ओके। ये पहले भी ऐसे ही था, इसमें बदलाव नहीं है ज्यादा कुछ, पहले भी था ऐसे अभी ही। एक्चुअली कैसे होता है, वेंडर को किसी किसी का कॉल आता है और वेंडर्स इन्फॉर्म कर देते कि हम लोग को क्वांटिटी कम पड़ रही है, तो क्या हम्म। करें हम लोग। तो हम्म। इसके बाद वो पीआर रिक्वेजिशंस वो सब आगे का प्रोसेस किया अच्छा जाता है। तो उनको पहले ही क्लिक नहीं होता है कि वहाँ पे देखे कि क्वांटिटी कम है या कैसे है। अच्छा, फाइन, नाउ यू गॉट इट? यस सर। Okay. So we have seen how to track also, how to create, how to track we have seen. अब मान लीजिए कि आपका JMS अप्रूव हो गया है by QSD. So once it is approved by QSD, you can go to ready for invoice submission. अब वो PO आपका या वो JMS आपका यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है? बट यहाँ पे आने के बाद एक चीज करनी है आपको, ये ड्रॉप डाउन से पहले आपको यूनिट रेट JMS सिलेक्ट करना है, तभी दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। Clear? Once you come to ready for invoicing, from drop down, select unit rate JMS because by default manpower JMS selected होता है। Unit rate JMS select करिए, ठीक है? फिर जिस ऑर्डर के लिए आपको इनवॉइस रेज करना है, you select that. So you can see order number, job description, measurement sheet number है, total amount, currency, डिपार्टमेंट जो अपने रिक्वेजिशन सिलेक्ट किया था, ठीक है? अगर वो डिडक्शन हुआ है तो वो अमाउंट भी दिख जाएगा, ठीक है? एसएससी कोड भी है। एंड देन हियर यू कैन सी अपलोड इनवॉइस बटन एक्टिवेटेड। जब तक ये टिक मार्क नहीं करोगे आप, ये इनएक्टिव रहेगा। जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे, यू कैन सी अपलोड इनवॉइस इज एक्टिवेटेड। उसके साथ ही साथ एक और है कि सेंड बैक। इस स्टेज पे आने के बाद पता चलता है कि कुछ और उसमें अप्रूवल्स या चेक करने बाकी हैं, सो आपको A1 को फिर से भेजना है आपके बहाने का। तो यहां से आप सेंड बैक कर सकते हो। जब सेंड बैक करोगे ये A1 के पास चला जाएगा, ठीक है? या फिर आपको इनवॉइस ही अपलोड करना है, देन यू कैन क्लिक ऑन अपलोड इनवॉइस, ओके, एंड दिस इज द प्लेस यू कैन अपलोड द इनवॉइस। यहां पे सिर्फ इनवॉइस ही अपलोड होगा। इनवॉइस का फाइल का साइज 2 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है? प्लीज डू नॉट अटैच एनी अदर फाइल्स बिकॉज बाकी सारी अटैचमेंट तो आपने JMS करते वक्त तो कर ली थी। यहाँ पे केवल इनवॉइस अटैच होगा। once the invoice is attached, I do not have a invoice right now. मैं इसका आपको एक वीडियो दिखा दूंगा हाउ टू डू इट। ओके, once you attach the invoice, यहाँ पे आपको इनवॉइस के कुछ डिटेल्स अपडेट करने हैं, जैसे कि इनवॉइस का नंबर और डेट। प्लीज बी वेरी केयरफुल इन राइटिंग दिस। इनवॉइस नंबर एंड द डेट एंड इनवॉइस अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, क्योंकि पहले आपका अप्रूवल जो होता था वो यूनिट प्राइस के बेसिस पे था, है ना? अब उसमें टैक्सेस भी तो ऐड किया है अपने इनवॉइस में। सो व्हाट इज दैट वैल्यू? राइट इट ओवर हियर, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ओके, एंड देन bill from the drop down select bill from, correct one। और ये होने के बाद, ठीक है, अब देखिए अब तक ये सबमिट बटन एक्टिवेट नहीं है। हम्म, तो जब तक ये चेकबॉक्स आप क्लिक नहीं करोगे तब तक सबमिट बटन एक्टिव नहीं होगा। बट यहाँ पे तो चेकबॉक्स भी एक्टिव नहीं है। रीजन, it will ask, the system ask you to go through the invoicing instruction first. So once you go through this invoicing instruction, ये इस पे क्लिक करिए लिंक पे, it will open a window जहां पे कि आपको ये सारे इनवॉइस के रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस जो है वो पढ़ने हैं। once you say like I have done, I have read it, तब जाके ये एक्टिवेट होगा। आप टिक मार्क कर दीजिए एंड देन द सबमिट बटन विल बी एक्टिवेटेड एंड देन यू कैन सबमिट इट। जैसे ही आप सबमिट कर दोगे, स्क्रॉल नंबर जनरेट होगा। मेक अ नोट ऑफ दैट स्क्रॉल नंबर सो दैट दिस नंबर इज यूज्ड फॉर द नेक्स्ट ट्रैकिंग, जो कि आपके पेमेंट का ट्रैकिंग होगा। Okay, what I'll do is I'll show you some small video for this. Just बता दीजिए कि मेरा स्क्रीन अभी क्या दिख रहा है आपको? इज इट द सेम विंडो या फिर प्रेजेंटेशन दिख रहा है मेरा? हेलो।
हेलो, हाँ, Same window. सेम विंडो है? ओके, Yes, देन sir. आई नीड टू शिफ्ट माय विंडो। 1 मिनट, 1 मिनट। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं जिसमें कि हम देख सकते हैं कि इनवॉइस को अपलोड कैसे करना है। ठीक है, इज इट विजिबल नाउ? Yes. Okay, so let me take you through it. Okay, so जैसे लाइक टिक मार्क कर दीजिए, या एक्टिवेट हो जाएंगे दो बटन्स। करेक्ट, then what you have to do is you have to click on the upload invoice. So from here, select the invoice, type of file you select it, and then you can scroll and write the uh, details of the invoice. Okay, one more thing, the invoice needs to be a digitally signed invoice. Okay, invoice ka number, invoice ka date, invoice amount inclusive of taxes, enter the description. Okay. This is the checkbox is inactive as well as submit button. So we'll click on invoicing instruction link, go through these invoicing instructions, come back, and then put a tick mark over there. And the submit button is activated. Click on submit, and it will ensure they reconfirm. Are you sure you want to submit? Yes. The scroll number will be generated. We need to take a note of that scroll number, and my invoice is submitted. Okay, clear with this part, all of you? This is how we Yes, sir. upload the invoice. So what we have seen the creation of JMS, tracking of JMS, uploading the invoice against the approved JMS, approved by A1, A2, and QSD. Now the next part comes, what is the status of my invoice? What is the status of my payment? Correct? That is the thing which we need to always track. So 1 minute, I think I'm out again. So let us see how do we track that particular information. I'm just moving my screen again to the portal. Yeah. Okay. So now from orders, we have seen measurement sheet. Now we'll go to the payments. Now in here, in progress will show me what is the status of my payment. ठीक है, आप ये चीज मेजरमेंट शीट से भी देख सकते हो यहाँ पे A3 लेवल पे, बिकॉज आफ्टर इनवॉइस सबमिशन इट गोज टू A3 एंड देन टू द अकाउंट्स। तो यहाँ से वो भी आप चेक कर सकते हो कि A3 के पास है या कहाँ पर है मेजरमेंट शीट से। बेसिकली मेजरमेंट शीट आप ट्रैकिंग के लिए यूज कर सकते हैं इन शॉर्ट। ओके, सो पेमेंट में इन प्रोग्रेस में आपको आपके इनवॉइस का स्टेटस
सॉरी, इन प्रोग्रेस में आपके इनवॉइस का स्टेटस आपको पता चलेगा. यू कैन डाउनलोड इट इन एक्सेल फॉर्मेट एंड मेंटेन इट. ठीक है, दैट इज इन प्रोग्रेस. ऐसे भी हो सकता है कि आपके इनवॉइस में कुछ मिस्टेक्स हैं या समथिंग इज रॉन्ग देयर, तो इसलिए आपको वो आपका इनवॉइस फिर से वापस भेज दिया गया. सो दैट विल बी इन डिफेक्टिव इनवॉइस. सो अगर डिफेक्टिव इनवॉइस से आपको रिसबमिट करना है तो आपको क्या करना है? विल कम टू पेमेंट्स, defective invoice, locate your invoice, right? And in there you can see the reason. क्या रीजन था ये रिटर्न भेजने का, डिफेक्टिव बताने का? क्लिक ऑन इट, go through it, understand it, and get it rectified, and then you resubmit it from here. ठीक है, resubmit केवल एक बार ही होगा यहाँ पर. So be very careful whenever you are working over here in the defective invoice. So this is about the invoice in progress, defective invoice. अब मेरे इनवॉइस के अगेंस्ट जो पेमेंट था वो हो गया है. आई वांट द एडवाइस नाउ, पेमेंट एडवाइस. तो पूरे डिटेल्स में चेक करने हैं. सो दैट विल बी अ पार्ट ऑफ पेमेंट हिस्ट्री. यहाँ पे पेमेंट हिस्ट्री जो है लास्ट 30 डेज तक की दिखेगी आपको. ओके, 7 डेज, 15 डेज या 30 डेज. सो बेस्ड ऑन दैट यू सिलेक्ट इट. Okay, over here you can see an icon. I'll show you how it is seen. 1 minute. Okay. Can you see this screenshot? So in payment history, you can see this particular highlighted with the yellow, the PDF file. So click on this payment advice, you will able to download it. Okay, so whatever amount is being paid, you can get to know कौन से invoice के against कब का है, क्या है, and all that things that you'll get to know in the payment advice. Similarly, in retention, okay, in retention, you'll be able to see if any amount is retained back. So what is the amount? Okay, so that those things will be visible in the retention. So these are the 4 tabs in the payment, that is defective invoice, in progress, payment history, and retention. Any questions in here till here? No, sir. Hope I was able to convey the portal to you all. Sorry. Okay, what I'll do is quickly I'll take you through the entire thing what we have done. ठीक है? So हमने start किया था. I'll come back here. We understood the entire portal. Then we have seen orders. Orders, we have new orders and orders in process along with ARC. In here I said ARC you can only go through what is it. Okay, you cannot edit it, you cannot create JMS from here. If at all you have to create a JMS, you have to acknowledge the PO, that you have to do it from either new orders, which will be used for acknowledging the PO, as well as creating the JMS. Okay, or you can go through orders in process for creating the JMS. So for creating JMS, you have to click on these 3 dots, click on create JMS sheet, and then create a JMS. While creating JMS, see to it that you select department, the specific line item, click on calculator, enter the details. Okay, all mandatory details, geometry, shape, calculate it, come back and attach all the respective relevant documents. Okay, documents size should not exceed 25 MB. You can attach Excel, Word, PDFs, zip, all types of file, images, you can attach it. Okay, there is no restriction on the number of files, but on the size of individual file it is there. Once it is done, write the remarks, select the type of file, select the approver, A1 approver name, and then review and submit it. Once you submit, then you can track your JMS through measurement sheet tab. So what is the status of my JMS, whether it is pending with A1, A2, A3, QSD,
Based on that, I can track it. I can track based on the company, based on the status. Okay, all those things we have seen from the filter. Next, raising the invoice. So if at all I have to raise the invoice or upload the invoice, that has to be done from measurement sheet tab in there, ready for invoice submission. In here, we have to select first from drop down unit rate JMS, and only then I have to go ahead for uploading the invoice. Upload invoice button will be activated only when you select that particular JMS or the order. And then you upload the digitally signed invoice, enter the invoice number, invoice date, invoice value. Okay, go through the invoicing instruction, and then the submit button is activated. You submit it, and next comes is the payment status check. So you can track in progress. If at all it is written back, you can select it, check it in the defective invoice, understand what is the reason, and then resubmit it again, fulfilling all the shortfalls or the gaps. If I want to pay payment advice, we'll go to payment history, wherein I get last 30 days advice, payment advice I can see here. And in retention, if any amount is retained, what is the amount against which PO or JMS, all those details we will be able to see in the retention part. These all things what we have done as of now in the Supplier First portal, which I have said in the beginning. These all things we will be doing it. Just only one part is remaining. Before I get into it, any questions you people have? I've tried to touch upon all the challenges which we come across from the users. अब एक चैलेंज होता है कि अगर मुझे दिक्कत आई तो मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं, राइट? सो what you can do is you can help yourself by using the help. ये जो मैंने कहा था लास्ट में करूंगा मैं. So I'm now talking about help here. So good to go ahead, guys. All of you. Yes, sir. Okay. I hope I'm not making the session very bored. Okay, no, sir. नहीं, किसी की आवाज ही नहीं आ रही, सिर्फ आप ही बात कर रहे हो. No, it was good. It It was seems interesting. like me and Neelam both are there in the session. Rest of. Thank you, sir. Thank you for the session. No, I'm not yet completed. Okay, chalo, great. Feels good like listening to the people, ना? नहीं तो मशीन के साथ भी बात नहीं कर सकते ना? That's okay. Good. Thank you so much, guys. Fine. Now, when it comes to help, you click over here. Okay, it will give you the FAQs, all the categories. Select the categories. Right now, यहाँ पे populate नहीं होगा, but in your screen it will be there. Select the question and get the answer. मान लीजिए यहां से भी आपको आंसर नहीं मिला, no problem. You go to the user guide. Here you will find all the user guides. देख लीजिए, इससे भी अगर मान लो आपका सोल्यूशन मिल गया तो well and good, नहीं मिला, come back to the FAQ. And then you tell us we are unable to do this so and so thing. कैसे? Click on raise a ticket. जैसे आप raise a ticket करोगे, ये allow नहीं करेगा मुझे अभी, but I'll show you how it works. Just give me a moment. I'll move my screen. Just a minute. I'll show you. So जब भी आप raise a ticket करोगे, तो I'm sorry. I've shared my screen. Please let me know. Are you able to see? दिख रहा है सभी को? Yes, sir. चलो. So आप मान लीजिए FAQs, user guides, solution नहीं मिला आपको, no problem. Okay. So raise a ticket. Click on raise a ticket. It will ask you to create a new ticket.
अगर पहले ही अपने बना के रखे तो यहाँ पे लिस्ट मिलेगी आपको, तो वो आप ट्रैक कर सकते हो, है ना, डेट वाइज या फिर जो एरिया पे आपने सिलेक्ट किया है वो। सो जैसे न्यू टिकट करोगे, फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू इज सिलेक्ट द एरिया, किसके रिलेटेड है ये एरिया आपकी। सो एरिया मतलब क्या है, आपका लॉगिन रिलेटेड है, प्रोफाइल मैनेजमेंट जैसे कि न्यू बंदे, नए बंदे को ऐड करना है या कुछ अपडेट करना है, या इट इज रिलेटेड टू आर एफ एक्स, वेदर इट इज रिलेटेड टू आर ऑप्शन, पीओज के रिलेटेड, पीओ नहीं दिख रहा है, समथिंग लाइक दैट, या एस एन आयर एंड विल नॉट बी रिलेटेड टू यू बट जेएमएस, इफ इट इज रिलेटेड टू जेएमएस तो सिलेक्ट यूनिट रेट जेएमएस। जब जेएमएस नहीं बना पा रहे हो या फिर जब जेएमएस बना रहे हो आप, तो एरर दे रहा है आपको, कुछ ना कुछ लाइन आइटम नहीं दिख रहा है, सो इट विल बी यूनिट रेट जेएमएस, या पेमेंट रिलेटेड है तो पेमेंट रिलेटेड। सो सिलेक्ट द एरिया फ्रॉम दिस ड्रॉप डाउन, राइट द टाइटल। टाइटल इज एज सिंपल एज जैसे आप ईमेल का सब्जेक्ट लिखते हो, एंड देन as far as possible try to attach the screenshot, ताकि पता चलेगा कि कौन से स्टेप पे आके आपको प्रॉब्लम दे रहा है या क्या है वो, है ना? क्योंकि एक मैं एग्जांपल दे दूं, काफी सारे ऐसे क्वेरीज आती थी कि हम जेएमएस नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है, 3 डॉट्स नहीं दिख रहे हैं, सो व्हेन वी आस्क फॉर द स्क्रीनशॉट वी सी दैट दे आर चेकिंग आउट इन एआरसी। सो ऐसे भी होता है, कभी कभी कोई इश्यू भी नहीं है, बट कैसे होता है ना कि काम करते करते वी गेट बोलते हैं ना, आउट ऑफ माइंड चला जाता है कि भाई मुझे यहाँ नहीं यहाँ देखना था, हो जाता है काम करते। सो ऐसे भी हो सकता है, या फिर देयर इज जेन्युइन रीजन कि 3 डॉट्स नहीं दिख रहे हैं। सो व्हेन वी टेक इट फॉरवर्ड टू टेक्निकल टीम, वही सेम क्वेश्चन वो पूछने से पहले आपने खुद ही दे दिया, भाई ये सारी चीजें देखो मैंने चेक करके रखी हैं। You attach it and save it. Once you do that, this is how it would be seen then. ठीक है, आप सेव कर दीजिए, एक टिकट नंबर जनरेट होगा जो कि आप खुद ट्रैक कर सकते हो। ये टिकट नंबर होगा, टाइटल, ठीक है। अब ये जो 3 डॉट्स है ना, यहां से आप ट्रैक कर सकते हो, इधर वो नया हो सकता है, इन प्रोसेस हो सकता है, रिस्पॉन्डेड या रिजॉल्व। रिजॉल्व मतलब आपका क्वेरी का सोल्यूशन दे दिया है। अगर सोल्यूशन दे दिया है तो आपको क्या करना है, आप टिकट ओपन करिए, ठीक है, टिकट ओपन करिए और सोल्यूशन में क्या लिखा है वो देख लीजिए। अगर वो काम करता है ठीक है, नहीं, वेल एंड गुड। अगर नहीं करता है, यू कैन राइट इट बैक टू अस, आप वो रीओपन कर सकते हो, या फिर अपने यहाँ टिकट डाल दीजिए, आपने ये सोल्यूशन दिया था बट ये काम नहीं कर रहा है, आई हैव ट्राइड दिस, और ये ऐसे दिख रहा है। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? सो अलग से आपको मेल लिखने की जरूरत नहीं, यहीं से आप काम कर सकते हैं। दैट्स द रीजन व्हाई इट इज सेड इज द वन पॉइंट फॉर ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द वर्क व्हाट यू कैन डू। आप ईमेल पे भी जाके चेक करने की जरूरत, डालने की जरूरत नहीं है आपको। एम आई क्लियर ऑन दिस पार्ट? Okay, the silence I'll take it as yes. If at all you want to approach us also, you can approach us on PNC. I'm writing my email ID over here, pnc.helpdesk@rin.com. पर क्या है ना, इस पे भी आप लिखोगे तो इसका भी एक टिकट ही बनेगा जिसका मेल आपको जाएगा, ठीक है, बट वो टिकट आप आपके सिस्टम पे देख नहीं पाओगे, ठीक है। सो आप इससे भी अप्रोच कर सकते हो, बट आई वुड प्रेफर अगर आप सप्लायर फर्स्ट से जाके हेल्प से टिकट रेज करोगे, इट विल बी इजियर फॉर यू टू ट्रैक ऑल्सो। अगर सोल्यूशन मिलता है इन फ्यूचर में, अगर ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम आता है, यू नो कि आपके पास सोल्यूशन ऑलरेडी है, आप वो जाके चेक कर सकते हो। सो दिस इज हाउ इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन फ्यूचर ऑल्सो। और else you can connect with us on the help desk numbers आपके पास होंगे। You can connect with us on the help desk number. Morning 10 to 6 we are here, Monday to Friday and Saturday till 1 o'clock. So you can connect with us over there as well. Okay. Now, if you have any questions to ask me, okay. There was one question. Yes, Somebody sir. asked.
हाँ सर ईबीज पोर्टल पे जब भी हाँ वेंडर्स ट्राई करते थे तभी उसको उनको पेमेंट का सब डिटेल्स आता, मतलब जो पेमेंट हुआ तो वो कब कितना हुआ, जीएसटी कितना कट हुआ, ये सब डिटेल्स का एक पीडीएफ अटैच होता था और उसी दिन उनको पेमेंट का रिसीव क्रेडिट होता था। तो वो डिटेल्स अभी इस पे आता है या नहीं, कैसे है? क्योंकि आपको ये बहुत सारी सारे डिटेल्स एडवाइस में आती थी ना, यस सर, ईबीज वहीं से पोर्टल पे। मिलेंगी, वहीं नहीं, से वो मिलेंगी। ईबीज पोर्टल से आती थी, अभी सप्लाई फर्स्ट पोर्टल पे आएगी या नहीं, कैसे? हाँ हाँ, देखिए रिपोर्ट्स में कुछ फर्क नहीं आया है, सब सब वही है। तो ये जो डिटेल्स है वो कहाँ पे मिलेगी, पेमेंट के इसमें ही मिलेगी या एडवाइस में आपको मिल जाएंगे। एडवाइस में? हाँ जी। ओके, ठीक है सर, ओके फाइन। अगर नहीं है प्लीज राइट इट टू अस, आप स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिएगा, विल गेट इट फॉरवर्ड, टेक इट फॉरवर्ड देन। ओके सर, ठीक है, फाइन। ठीक है, ओके। ओके सर, ओके। Guys, one more thing before we wind up. As every training has, I would like to have each one of you to share your feedback on this. And anyways, I'm here for the questions. I'm sorry. One second. I'm just sharing the feedback link to all of you. Chat window में मैं डाल रहा हूँ आपको. So request all of you to please give your feedback, which will be helpful for us also. Yeah, if any other there was one question who asked me related to invoice. Sachin. Is there Sachin? Yeah. Sachin, I hope I was able to touch upon your query. Sachin? हेलो। Yeah, hello. हाँ, सुनो ना, हमारा क्वेरी था, हम जब लॉगिन करते हैं ना, हेलो, हाँ हाँ, तब बोलिए। जो डिटेल्स आता है ना पेमेंट इनवॉइस रेज करने के लिए, वो हमें कुछ भी नहीं आता है। हमने स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। अच्छा, आपने ऑलरेडी शेयर किया है? हाँ ठीक है। हाँ, शेयर किया है अभी को, सॉरी, शेयर किया है, चैट पे शेयर किया था अभी। और मेल भी किया था। सैटरडे में रहना कंपनी का। आपको टिकट नंबर मिला होगा तो सेशन के बाद टिकट नंबर एक बार भेज दीजिएगा या बता दीजिएगा। टिकट नंबर नहीं मिला है, वेंडर कोड है सिर्फ हमारे पास। अगर आपने मेल भेजा है तो एक मेल पे टिकट नंबर आया होगा, तो देखिए। मेल आईडी, एक सेकेंड ना, इसी मैंने कहा कौन कि सा आप एज मेल फार एज आईडी? पॉसिबल सप्लायर फर्स्ट पे टिकट रेज करिए ताकि आपके पास भी वो टिकट नंबर सामने दिखे आपको। सप्लायर फर्स्ट में, एक मिनट। अच्छा, और एक चीज, अगर टिकट सप्लायर फर्स्ट पे रेज किया है तो अलग से मेल मत लिखिए, बिकॉज एक ही चीज के दो दो टिकट बन जाएंगी और जरूरी कि दोनों भी एक ही बंदे के पास चले जाए। ठीक है, हमें टिकट में वो नहीं मिला है, नंबर नहीं मिला है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप तो मेल डालना पड़ेगा क्या? मैंने अभी आपको समझाया ना कि टिकट आप कैसे रेज कर सकते हो सप्लायर फर्स्ट से, वैसे कर दीजिए, या फिर आप ओके, मुझे ठीक ईमेल आईडी कौन सा है है। बता दीजिए, मैं चेक करा दूंगा। यस कंसल्टेंट सर ये आप एक काम करिए सचिन जी, सचिन राइट? यस यस। हाँ, तो इस सेशन के बाद है ना, आप मुझे पिंग कर दीजिए आपका ईमेल आईडी जिससे आपने मेल भेजा है, मैं चेक कराता हूँ, अगर जरूरत है तो आपको कॉल करा देता हूँ। ठीक है, ठीक है ठीक है। ओके। Others, please complete the feedback form. Once you have completed, you can write it in the chat window, completed, done, and then you can log out. So thank you all of you. Thanks for your valuable time and listening to me. Hope I was able to convey the details to you all. So thanks and wish you all a good day and a happy week ahead.
रियल